Good evening, all. I would like to call Shruti Karnar to begin the program. Very good evening to one and all present over here. I, Shruti, welcome you all for first international webinar hosted by Invisara Forensics in collaboration with Gifsa Craft and Soebit Cybersecurity. This session will explore anti-forensic techniques used by cybercriminals and provide strategies to effectively counter them. To begin with, we will have short introduction about Invisara Forensics. Invisara Forensics is founded by a group of forensic science graduates. Invisara Forensics specializes in evidence analysis, bringing together experts and enthusiasts to delve into the fascinating world of forensic investigation. Their mission is to solve crimes by unveiling the smallest clues left behind, and they are passionate about advancing forensic science through meticulous evidence analysis. Next, in line, we have Gifsa Crafts, that is Council for Research Applied to Forensic Technology and Science. This is student-driven initiative from the Government Institute of Forensic Science, Chhatrapati Sambhajinagar. It was established to advance forensic research for societal benefit. It is dedicated for fostering a culture of innovation, critical thinking, and creativity to develop reliable forensic solutions. The organization continues to push the boundaries of forensic science for betterment of society. Now, I would like to take an opportunity to introduce our speaker, Mr. Soenil Sobedar. He is solution-oriented IT and cybersecurity professional who spent more than 31 years in the IT sector, 21 years as a freelancer. Sorry to interrupt. Hello, sir. Yes, hello. Good evening, sir. Good evening. Are you able to hear me? Yes, sir, you're audible. Okay. I can proceed or do I need to wait? No, sir, you can proceed. Okay. So my screen is visible for you all. Yes, sir. Okay, thank you. Namaste. जैसे कहा, I'm Sunil Subedar from the Netherlands, Europe में. I hope everyone is able to understand also Hindi. So मेरा सेशन थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे. The reason मैं बाद में भी बताने वाला हूँ. So if you have any question, you can also ask in the chat. Hello, sir. Namaste. Oh, okay. So let's proceed. A short disclaimer. The information what I'm sharing is based on education purposes. You will see during the session also some images we have created by using ChatGPT. So these are fake images and not real images, what we are using. So to illustrate on that. So I create a short agenda, already mentioned about me and the part about Soebit. I will also skip that one. Oh. Sorry, sir, I'm not able to hear you properly.
to me. Sir, are you able to go to mute or is it referring to me? Anyone? Moderator, can you please put it to mute? Okay, as I mentioned, the agenda, what is digital forensics? About anti-digital forensics, what are some of the techniques, how to defeat it, tip also about some career into the digital forensics field, and at the end, almost the end, some motivation tips, questions, and we will announce also to event, one free and one paid event will be also showed during the session. During the session, if you have any question, you can put it in the chat. At the end, if the time left, we are able and I'm able to answer those questions. So this is all about me, who I am. Already mentioned a part and duty, but quickly about me. Is this my background? So for now, I will not spend too many time about it. As I mentioned, this is quick and short about my company, Soebit Cybersecurity in the Netherlands, what we are doing, on which services we are working. But they could be maybe interested to know we have signed more than 10 MOUs with college universities in India. Here are some of the states where we are working and having signed, but also outside India with IT and cybersecurity companies. So hear more about what we are doing on which level. We are also speakers together with my team. We are also suggest this kind of sessions. So we will invite to speak. This is one sample of government of Kerala. The police force invite me to speak about red teaming. Here another one about the RRU, Rashtra Raksha University in Ahmedabad. Here online and in-person session where we also join to speak about career, quantum computing, any of those part. And this is one sample about a conference in Singapore where I was invited to speak about DDoS protection, machine learning, and AI. So to make it clear, some of the parts, and due to this 1 hour, I'm not able to cover a lot of topics. So this kind of topics will not be covered and discussed. Short and quickly, I will discuss a bit about malware forensics and those others what was already in the agenda mentioned. So I guess maybe almost familiar, but to start, what is cybercrime? Maybe all you already know, but this is the part where we are moving and see what is related to and what is the definition of cybercrime. So any crime where the computer network, mobile devices, any digital devices has been implemented to use it and to use it to make a crime. So of course, then I don't, and maybe known also what is cybersecurity. Then on the cybersecurity is the part where we are using the IT security point, and to be sure that we are able to secure those computer system networks, etc., from the security point of view. Digital forensics actually the part where we are now currently discussing. For my understanding, digital forensic is just a part of cybersecurity. It's another branch or another domain where you are able to specialize on that field. So digital forensics, where we are trying to recover, investigate digital evidence. And especially, it's not always the case, but especially it could be related to computer crime or investigation on threat intel or any part what you want to know what happened and try to trace and find evidence on those items, on those digital media. So some of types, there are more, but here's some of them. Some types of digital forensics, computer forensics
email forensics, so you are able to go in depth and see which kind of forensics you want to do. Network forensic based on the network environment, mobile data, media. On data and media forensics, I have two use cases during the session. I will also discuss about it, some samples, but also the database. But of course, there are more, as I mentioned in the previous slide, IoT forensics, cloud forensics. So there are plenty of them. We can add all of them in those types of digital forensics. So anti-digital forensics is referring that we want to use tools so that attackers are not able to, so the investigators are not able to do proper investigation. So you want to prevent it. So if an attacker come into your network, they should be, or they are trying to work on that level that even a forensic investigator is not able to find a way how and what they are doing. So that is the part, some of those goals, why an attacker is doing this. So make it difficult to do your investigation. They will hide evidence of what you are able to take. Example, if a thief is coming to your house, they will try to steal. They will do it very on a very clever way. They want to be sure that you are not able to hear that someone is in house. So, but also if they took this stuff, they also want to be sure that the trace what they have left is not, you are not able to find it, or so they try to hide those traces. So on technical, on forensics and on computer forensic, there are also ways how to do it. So those will be the steps. So you try to destroy those evidence by using maybe connecting from a VPN, or remove the backup or delete the backups. So even a recording or anything what has been made, they are not able to go back in those situations to see their backup. There are some of them, but the main goal is that the digital forensic should not be able to do proper their investigation, or during the investigation, they will stop and say, okay, this is only the evidence that we got, we are not able. So due to law, they need to provide a proper way of evidence. And the law, there are rules on it, the regulations on it, they need to meet it. So based on that, they need to be able to provide it. So, and of course, attacker is aware about those law also and regulations. So if you can't prove that the backup by storing back the backup or restoring your backup to show that this is the case, yeah, you are not able to put it as evident. So some of the tools and techniques. Hello, are you able to hear me? Can anyone confirm? Yes, sir. Yes. You're audible, Okay. sir. Yes, sir, Okay, you're thank you. audible. Yeah. Yes, sir. Some of the tools and techniques. So why we are using those tools and techniques? Because as we know, such as by police and crime, or not digital crime but normal crimes, the criminals want to be a step further, where and the same situation apply here in digital forensics, where the criminals want to be sure that even they break your computer or put malware on your systems, it's hard for you to find the proof that this happened. In situation, you will see, if you read the newspapers, you will see a lot of situation that attacker was almost 3 months into the network, hiding somewhere, and try to find a way, collect the data, collect the information, or move the data back from back doors to other environments where they are able to wait till the correct moment.
and then mostly a few years ago happened in one of the universities in Europe. The day when they tried to attack or put the malware or anything on those network was during Christmas Eve evening. They know 24th, 4th of December in the evening, everyone is celebrating, starting already the Christmas celebration. So who will monitor? Who is checking what's going on the network? So those kind of part, they try to use it. I think I'm hearing echo, but okay. So here are some of the anti-forensic techniques. So you will see 10 of them during short time limitation a bit. I will discuss 7 of them quickly. Of course, based on those items, you are able to search and find more information on the internet also. So data deletion. So here is the overview. You will see during the upcoming slides, this overview will be smaller at the left below corner. And by mentioning with the numbers as data and file deletion, we will discuss 7 of those. So data and file deletion, deleted. So if you delete it, how can you or are you able to restore it or find those deleted files in the recycle bin? So you need to get to understanding and know how to deal with the Linux, Windows, and the Mac file systems. Also those file systems. Of course, there are some more file systems, but the common you should be familiar and to know how to find those file systems. How you are able to get information recovered from your recycle bin using a recovery tool, even your recycle bin has been empty, how you are able to get it. Also, maybe you need to find a way where you are able to restore the whole partition on the computer systems, what you are using, or the data or backup part, what has been set where you are able to get the information. So these are some of the ways what you are able to use to collect those information. You need to be sure with accounts or website or any part where you want to be sure you want to get the information. So maybe you need to use the password protection tools, dictionary, brute force attacks, or any kind of password cracking tools where you are able to get the password after that. And it could be a simple Excel file with a password where you want to get those information from the Excel file. But if the Excel file has been protected with the password, maybe you need to crack the password. So you will see during this session also a lot of ethical hacking, some pen testing kind of skills and knowledge is required to be and become a good forensic investigator. So this is a bit an add-on on your ethical hacking skills and knowledge. Password guessing could be options where you are able or trying, but yeah, also you can't try the whole day. Some systems will block the account after 3 incorrect passwords or 5 incorrect passwords. So maybe you need to wait 24 hours or someone need to unlock it and then you are able to do. So there are some of the techniques, but also password protection on your BIOS, on your laptop or computer systems can be, or on your hard disk, password protection on your hard disk before you are able to proceed. Techniques as such as DLP, data loss protection kind of tools can be applied where you need to be sure or bypass it before you are able to proceed. For BIOS, there are also more options where physical you need to reset the jumpers or chips on the motherboard or on the main system board of those computers or laptops before you are able to do. So there are techniques available, but these are some of them where you should be able to be familiar. Steganography, it could be that they are creating, for those who are not familiar with steganography, is just having an image, and in the image, as you can see, maybe this kind of image. Behind the image, if I send the image to someone, and I send also a secure code or an
password for the image, they are able to see the image, but underwater, they are also able to find maybe a text message or something where they are able to read more information. But our eyes are able to see just the image. So, and that image and the text can be included in the image, but that could also be video files or audio files. So this is one of the techniques, the very old techniques already used, I think, 200-300 years ago, maybe more longer, when the computer systems was also not in place. If persons or groups are was going to war, or they will get it on a paper, but they use invisible ink. If you put water on the paper, then he was able to read the text, but normal eye, our eyes was not able to see those texts. So by using water or heating the paper, that is your part of key where you are able to use it, because you are knowing the key. With those key, you are able to crack and get the information from the paper what you need to have. So those kind of techniques are still in use and can be used to hide information. Data hiding, quickly already discussed, but here are some other method, also hiding directories, folders, but data hiding in your memory. Recent, actually, very often you will see that they try also to put data in the memory, and that can be hello. So there are some of those techniques here also to hide data. Trial of obfuscations is also one of the techniques. But as I mentioned, you can also remove your the backup, but logs files, add or change the timestamps by investigation, trying to know what happened and following the step. If you change the timestamps or the timing or the timing zone, could be new or fake accounts you are using, by misleading them how they should be able to proceed. For traffic content, as I mentioned, VPN or other kind of techniques can also be used where they are not able to find a way or a protected way how you are changing. Or so these are some of them. Another one is by overwriting the data. So as we know, if you overwrite the data, it's harder to get the information and to restore it also. But there are still also techniques and methods, and by also trying to get the information from the metadata, you try or should be able to get the information. Based on that, you should be able to create. But also those overwritten data, if you want to try, there are tools available where you are able to try to recover it. So artifact on wiping. So those removing data from your recycle bin. So those permanent deletion, your disk deleting, the file wiping, but also discoursing the disk by using a magnet that it will destroy the data or those kind. So there are some specialized companies who are still trying, and there are opportunities and possibility to get even those destroyed disk data recovered. It's a bit harder to get it, so the question will be raised mostly: what will be the time consuming, the financial part to get the data, and if I get the data, is it then worth to get the data or not? But in some crime situations, it could be that that is crucial, or you need to have those information. So then even it costs too many time or money to get it, even then they try to restore and get those data. So these are some of them, as I mentioned. Cryptography part, how to decrypt, encrypt, is also a separate topic.
program packages, and we need to try to minimize the footprints is not covered now, but there are, please check on the internet and you are able to find also similar kind of techniques. And so moving forward, as I mentioned, two simple, I try to put it short and simple use cases. In the past, I worked for the Ministry of Justice and Security in the Netherlands for on the SOC. But the SOC was not only the Security Operations Center was not only responsible to monitor the malware and stuff, but also they had a digital forensics team. This government part was our main clients was the prisoners of Netherlands, so all the jails, and our part was also to try to secure the jails on physical way, but you will get the physical security guys who was doing that, but also the way how we are able to do it on digital. So having say that a background info about it, so as I mentioned, apart, and this is an overall one, but what we was doing during the digital forensics part, identification. So, and put one sample in this situation. So in the jails, they still want or try to get a mobile phone. Even those physical hardware checks and all kind of security has been in place. They try to find a way how they are able to get mobile devices or on a USB stick with data on it into the jail in the prisoners part where they are able to see or collect the information. So as example, if we got one and the security check has done and they found a USB stick example from, and they will send it to our team where we was doing and getting the information. So we first search on the evidence. We collect those evidence that could be not only USB stick, but also computer systems, what they have used. We try to be sure that we follow the chain of custody. For now, I will not go in details about chain of custody, but we try to analyze the data. So the data, what we got, we get rid. In some situation, we also using OSINT, open source, to get the information about those persons or what we are checking or to getting the information. We was able to use some hardware tools, and those tools was only for the police and the government agents. So as a commercial party, was not able to buy those kind of hardware tools to do investigations. So that could be also a part to understand, try to learn those kind of tools. Some software tools we was also using to get the information. As I mentioned, here are some of them, but yeah, as I mentioned, in my sample is just a USB stick, removable media, but now these days you will also see smartwatches, a ring where they are able to store information, but also the game consoles could be one of the part where they are able to get or store information. So there are plenty of opportunities, but we need to check and find those information. After that, by collecting, we create a report, and in some situation, we need to present it also. What do we have done? How do we get the information? What tools we was using, etc. So this is quick, short background about it. As I mentioned, physical. This is a sample or just an image about an jail somewhere in the world, I guess. So as I mentioned, Ministry of Justice and Security for the prisoners we was working. They was doing the physical security check, and if we get those assets in this situation, USB sticks, we was doing the investigation and trying to get those report and send it to them. So another sample of an image about those kind of environments. Of course, those investigation what we was doing was led by the law and by the lawyers from the government part. And after getting those confirmation, we was able to investigate it. Here another sample. There was, I think 5 years ago, there was some of the pilots going on. This is a sample in a jail. Previous was a jail. The red squares are
doors of each jail. Now they turn over to for volunteers, no volunteers, refugees from Ukraine. I guess they are now. So the jail is not in use anymore. But they give the option to use a laptop or a tablet to register if you want to have a visitor, or if you want just to check on your report before you are going to present it together with your lawyer. But those high profile criminals had so many paperwork, so they put it on a laptop. So they get it only access to the laptop to be sure that they are able to access their own documentation. So in our situations, even then, we need to be sure that those laptops was secured. So the USB stick and was not disabled in the BIOS, etc. But after doing this kind of part, a high criminal person has get the information for a few months, and after that the laptop came back, and we was checking and trying to secure. But in those situations could be also that we still want to know what's going on and which kind of information we are able to get from the laptop or the hard disk or stuff what they was trying to do. Example could be they still try to open Firefox or another browser, what should be blocked, or and we give access to one browser and have access only to the intranet or one page, or that's all, a kind of SharePoint or something like that. But that's all. But even if they have those access, they try to break out and see the opportunities to move forward to other environments. So those laptops are and the tablets are not for everyone in the prisoners, but and those tablets project stopped, I guess. So they are not using anymore this approach where they are able to register or a newcomer or visitors. So next topic and next part, just quickly about some career tips. Just want to highlight some of the roles and names which you will see very often, or they are mixing digital forensic, crime, cybercrime investigation, and digital forensic analyst. Here are some of them. Here are some more what you are able to see and find. But together with digital forensic incident response, you will see also very often the combination digital forensics examiner or junior data recovery practitioner, etc. But these are the standard, the basics roles, but more for the advanced, or if you want to proceed further, you will see this kind of senior police digital investigation example, manager in those. So here are some of the roles available for this kind of roles. This information, I've mentioned the source, the UK Cybersecurity Council has set up this nice overview. If you click on digital forensic, as you can see, there are more cybersecurity roles available, but just click on it and you are able to see the link. As I mentioned, incident response, cyber threat, monitoring, network and vulnerability management are related to cyber digital forensics. So based on that, you should be able to highlight and go further to get those informations. Bit about also digital forensics for women and cybersecurity part. As we know, and maybe known story, but if you are comparing at home with your mom or sister or family, auntie, and you compare a bit the brain about the woman part, they are able to do multitasking stuff. They remember every details. Organization skills are very good, or mostly much better. Then at the left side, you will see the comparison with the men's side. Social science part, they are able to do it. So if we compare the men part, how we are able to collect and get the information, we are stronger maybe on technical part. The reason I'm showing this is even those are some comparison
but also in the digital forensics area and in the cybersecurity field, those women's skills are also having a huge add-on and an added value to do digital forensics or any on cybersecurity management level or any of kind. So if you combine both of them, we should be able to be stronger and be able to get more information related to cybersecurity and protect our environment better. So here are some of them, women who are already in the cybersecurity field with several kind of or jobs roles. So my advice will be, if you want to know anything, please, they are available on LinkedIn. Please reach out to them, I guess, and I hope they should be able and are happy to you advise you, guide you. Two of them I just want to mention. Vandana Verma from Bangalore is a known one and very common person where I work together and speak often. And Namrata Datta, she's from Mumbai, also one. So if you want to reach out to them, want to have any question how they are facing or which kind of issues they was facing when they was moving into the cybersecurity field, please reach out to them. They are happy to advise you and help you. So as I mentioned, quick about and try to do it a bit short because due to time, I still want to give you some opportunities to ask some questions. So that's the reason I will go a bit quick about it. Indeed, all the information that I'm sharing is mostly not possible in 1 hour. So, and also this malware, normally we should be able to present malware in only 1-2 hours. So I'm not able to cover all the information, but and digital forensics one, if you are looking at any kind of training, those training are mostly 40 hours training, 5 days, 8 hours per day. Those kind of information you will get about all digital forensics kind of trainings. So here, what is malware forensics? If we try to find, analyze, and investigate those malware. Reason why I'm also adding the malware forensics due to all the breaches what's going on in the world, you will see this kind of part. Even the SOC is monitoring, but the SOC is not the forensic investigators. So they need to hand over to the senior SOC engineers, and some of them have background or skills about digital forensics to try to find the evidence what happened and which kind of malware, how they come into the network, etc. So here the ways how they are. So if you get a threat, you try to get the evidence. A threat intelligence, you will, if you have already, you can add it also, and the way how you are able to prevent it. So introduction about malware, I will skip for now, sorry, but here are some basics about. It's not really the part of digital, but you need to be familiar about it and know what are they. And here are some of the tips how and what you can do to define and what you need to do to be sure that you are able to get more information and the way how you should be able to work. So if I pick the static and the dynamic malware analysis moving forward in the upcoming slides, but here again, preparation, collection, analyzing, identifying, extraction, so to collect the information, and documentation. One of the part was very often a person are not spending too many time is about those documentation. As I mentioned, you need to follow the chain of custody, how you get it, from where you get it, with time you get it, and how do you move from A to B, which kind of steps, what happened, to be sure that your data, what you are traveling or sharing, has not been misused of manipulated during that way, or so you need to be proving that it's integer and you are able to collect it. So that is important part also in your documentation where you need to have and follow those steps. So as you can see, it's not an always, of course, extraction, identifying, using the tools are the technical part, but also the non-technical part is also a part where you should be able to be familiar and able to work on it. As I mentioned, two of the tools, there's not the digital forensics part, but it's more
to understand the malware part. Static analysis. So in those situations, you are trying to analyze the code. What is in the malware? How they create it? How they execute it? So, and in the dynamic one, you are just trying to execute those malware. And of course, you don't want to execute the malware on your own computer or on your network or VM. So you want to do it in a controlled way in maybe a closed environment or an environment without access to order, and it could be a standalone environment or a separate computer. We don't have access on the network, no access on internet, and then you are able to control. If something happened, then it will only be on that environment, on that system. So that is the dynamic one part. So here, so as I mentioned, we are not running the statics one, but we try to get the information based on this kind of techniques. Collect the information and see what is going. So as you can see, you need to have understanding about code, understand about what's going on, how the code has been created. So Python or PowerShell or any of code kind of languages has added value to understand it. For the malware, for the dynamic one, you will see other kind of tools. Snapshot, but mostly and very common is the one to use a sandbox. So sandbox is a closed environment, and a closed VM could be where you are able to get the information, and it's on a closed way. So here are some of the tools. As both of them, you will see some tools for getting the information. Wireshark is very common on network to track the network port and see what's happening, but also used to find maybe certificates what they was using, and other kind of tools, the process monitors, etc. There are plenty of tools available, but here are some of them. For sandboxing, the dynamic one example, Koku is a sandbox one. It's an open source one. Here's some basics info about it. You can just play around with it, upload some files and see what's happening. Here is a screenshot how it look like. So you can just put a URL or a hash on it, or just submit the file, upload those file on it, and let them run and see what are the reports and results. So as I mentioned, it's an open source, so you are able to play around and make use of it. So almost to the end, and I hope I'm still in the time. Some key takeaway tips. What I want to share is, if even you are not aware which kind of direction you want to go and which are the opportunities, but if you have any dreams, please proceed and try to meet those dreams what you have. If you don't have dreams, also good, but try to focus on the topic or domain where you want to work. If you are studying, or if you are a teacher, professor, or any kind of person, a professional already, try to focus, keep your focus on that area where you are working or want to proceed. So as an example, मैंने begin में कहा था, sorry, अब तक तो थोड़ा कम हिंदी मैंने यूज किया, but the reason why am I mentioning example, मैं 10-15 साल पहले मुझे हिंदी प्रॉपर नहीं आता था. मेरा एक दिन दो तीन दोस्त है दिल्ली में, हैदराबाद के दोस्त जो है उसको तो हिंदी आता था, मैं उतना नहीं. जब मैं उससे कॉल करता था मैंने कहा मेरा हिंदी तो ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि हम लोग घर पर बैकग्राउंड हम लोग के है, पर दादा हम लोग के इंडिया के है, मगर यूपी या बिहार के होंगे. सो हम लोग भोजपुरी घर पर बात करते थे. सो थोड़ा बहुत तो हिंदी आती थे, मगर प्रॉपर नहीं. सो जब मैंने उससे बात किया, हैदराबाद के मेरा दोस्त से, तो मैंने कहा आपका हिंदी कैसे है? तो मैं तो ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, मत मालूम हूँ. सो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं कॉल करूँगा आपसे बात करूँगा तो हिंदी में कहूँगा. तो वो कह रहा क्यों, आपको तो इंग्लिश आते हैं, तो इंग्लिश में बात करेंगे. तो कहना नहीं, मुझे जो मेरा हिंदी इम्प्रूव करना है, आज नहीं कमिंग ईयर्स में, देन आई शुड बी एबल टू स्टार्ट लर्निंग ऑन इट, और उसमें जब बात करेंगे तब सीख लेंगे. So that was my focus, to try to learn Hindi and be sure कि मैं proper बात कर सकता हूँ हिंदी.
तो 10 साल बाद अब जब मैं वही दोस्त से मैं बात करता हूँ तो वो मुझसे कहता, सुनिए आपको तो हिंदी मेरा हिंदी से बेहतर हो गया, क्योंकि मैंने उस पर तो कभी फोकस नहीं किया। मैं तेलुगु बात करता हूँ और दूसरा भाषा इंग्लिश ऑफ कोर्स भी, मगर दूसरा भाषा, मगर हिंदी पर ज़्यादा फोकस नहीं था। सो दैट इज द वे हाउ यू शुड बी एबल टू वर्क। जब आपका फोकस वही होंगे और जब वही पर काम करेंगे तो शायद आप वो गोल रीच कर सकते हैं। सो इवन सैंपल देता हूँ, मुझे जब बात करने होता है इवन एक कंपनी या आईटी या जो कंपनी होंगे इंडिया में होंगे, इवन दे आर सीईओ और मैनेजमेंट लेवल पर, मेरा पहला क्वेश्चन होता है, सर मैम आप लोग को हिंदी आती कि नहीं? तो जो लोग दिल्ली के होंगे, मुंबई से ऊपर होंगे शायद वो एरिया में, तो वो लोग मोस्टली कहता हाँ। मगर साउथ के लोग जो होता, तो मुझे भी मालूम साउथ इंडिया के लोग, तो वो लोग मोस्टली कहता नहीं मुझे नहीं आता। तो जहाँ वो लोग को जो हिंदी आते तो मैं प्रेफर करता हूँ भी हिंदी बात करने के लिए। और रीज़न मैं भी कहता हूँ कि जो नहीं करूँगा तो मेरा हिंदी नहीं इम्प्रूव होंगे। एंड सॉरी, कभी मिस्टेक हो जाता और वर्ड नहीं आता तो मैं इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ। बट to try to learn that could be a way how you are able to reach पैशन और क्यूरियोसिटी। आपको ये डोमेन में कुछ जाना करना है तो उसके लिए आपको रियल जानना पड़ेगा कि कैसे और क्या किया है, क्यों ये किया है और कैसे किया है। इफ यू वांट टू नो दोस, गेट द आंसर ऑन दोस क्वेश्चंस, हाँ तब आप कोशिश करके ये फील्ड में जा रहे हैं, नहीं ओनली डिजिटल में, साइबर सिक्योरिटी पूरा फील्ड में। सो इवन यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, आपको वो फोकस रखना पड़ेगा। ट्राई टू गेट योर लाइफ वर्क बैलेंस, स्पेशली घर से काम करने के लिए। कितने लोग कहते हैं यार यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपको ये लाना है ये लेके आ सकते हैं क्योंकि घर पर तो हो नहीं, घर पर से होता है तो काम भी होता ना। जब आप ऑफिस पे थे तब भी नहीं वो सामान शॉप से नहीं खरीद सकते थे ड्यूरी दैट टाइम और टाइम विंडो। बट नाउ लोग समझते हैं कि घर से काम कर रहा है सो ही इज डूइंग नथिंग और प्लेंटी ऑफ टाइम, इसको सेंड करना ये मार्केट से ये सामान खरीद के लाने के लिए। नो, आई नीड टू जॉइन अ मीटिंग और आई नीड टू ऑल्सो वर्क, पढ़ना पड़ता डॉक्यूमेंटेशन, ये वो काम में ऐसे होता। ऐसा मेंशन देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, देयर आर प्लेंटी आउट। मैंने तो सिर्फ 4 सैंपल दिया हूँ दोनों का, मैन और वुमन में। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो एंड सर वेरी इट इज अ टाइप ऑफ फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक टाइप। इट इज जैसे जैसे सामान अपन घर से अब मंगा सकते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। सॉरी, अबे आप रिपीट कर सकते हो अपना क्वेश्चन? So here are some of them. मैं सब नहीं डिस्कस, बट नीड someone you will see कि आपको skills होना चाहिए, soft skills, technical skills, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया था। some के लिए आपको हैकिंग skills होना चाहिए। बाद में आप देखेंगे कितने ब्रांचेस और जॉब्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, सबके लिए नहीं या बट सर some of them. क्योंकि सर Yes. बट क्योंकि सर क्योंकि स्किल ही एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेसर के लिए सबसे ज्यादा स्किल मेंटेन ज्यादा मांगती है, क्योंकि हर चीज में स्किल होनी चाहिए। हाँ, मगर उसमें भी होना चाहिए कि आपको प्रॉपर टेक्निकल स्किल है और सॉफ्ट स्किल्स। जैसे मैंने कहा सॉफ्ट स्किल्स में होता है हाँ एग्जांपल, तो आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए या और हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट यस टू द सर मैनेजमेंट। मुझे तो कितने लोग आते हैं, या कितने कहते हैं मुझे मेरा पास सर्टिफिकेशन है एथिकल हैकर का, पेन टेस्टर का भी। और जब मैं उससे बात करता हूँ कि यस अच्छा सर ठीक है, आप मुझे एक्सप्लेन करना कि सिंपल टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूँ, मगर सिंपल आप मुझे एक्सप्लेन करना कि मुझे जाके मेरा मैनेजर से कहना कि ये इन्वायरमेंट में एक फेनेबिलिटी है, तो कैसे आप कहने वाला है? तो वो स्टार्ट किया, मैंने कहा इंग्लिश में करने के लिए। तो उसको तो प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता था, तो उसको टेक्निकल स्किल तो ठीक है मगर उसका सॉफ्ट स्किल पर वो काम नहीं किया था। तो वो जो आप प्रॉपर मुझे नहीं बता सकते तो छोड़ा, आप मैनेजर्स के जो आपको एक्सप्लेन करना। सो दैट इज द वे। यस इसलिए सर आपका यस सॉफ्ट सर स्किल्स भी दिखाई देता है, आप प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे बताएंगे उसमें भी एक लेवल दिखाई देता। जो लोग प्रोफेसर हो और जो लोग यहाँ कॉल में है एज इंजीनियर्स और ऑलरेडी सालों से काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू सी दैट एंड नो कि हाँ ये
ये प्रेजेंटेशन के लिए काम किया है, कुछ किया है और कुछ नहीं किया, और जो ये लिख रहा है ये जस्ट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया और यही दिखा रहा है. सो दैट कुड आल्सो. सो इंडीड जब आप एक्सपीरियंस फील्ड में जाएंगे तब थोड़ा बहुत मालूम हो जाएंगे. मैं नहीं कहता हूँ कि सब मालूम हो जाएंगे, बट दोज आर सम पार्ट्स वेयर यू शुड बी एबल टू फोकस. कीप लर्निंग मेंटालिटी इसमें भी होता है, आपको सीखना पड़ता है. आप जब क्योर नो वन सीखेंगे अपना इम्प्रूवमेंट, तो हम लोग एज फोरेंसिक और डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ आल्सो. Here's some tip आप लोग लेंगे, मे बी ऑलरेडी नो, बट साइबर क्राइम जो होता है तो आप लोग रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. ये आप लोग का इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है. एडवाइस होंगे भी, प्लीज दिखाई देंगे, जस्ट put it and report it. They make it very simple based on the website, Telegram or WhatsApp or email address पर आप ये फॉर्म फिल करके दे सकते हो. तो मिल के सब कोई जब हम लोग कंप्लेन करेंगे तो शायद इम्प्रूवमेंट और जल्दी होंगे और हो सकता है. जैसे मैंने कहा उनके दो इवेंट्स जस्ट क्विकली हाईलाइटेड. एक है तो ये कल का न्यूज़ है. सो रिसेंटली वी गॉट इट. My company has signed an MOU and as a knowledge partnership for the Indo-Dutch Cybersecurity School. ये NESCOM का एक इनिशिएटिव है of the government of Telangana. बट जो लोग तेलंगाना के नहीं है, दूसरा पूरा इंडिया के लिए ये अप्लाई होता है. एंड वी आर एबल टू सबमिट एंड प्रमोट पूरा इंडिया का स्कूल यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट्स के लिए है और प्रोफेशनल्स की दोनों का ऑप्शन है. देयर इज अ पेड वन, इसमें प्राइसेस भी लिखा है. इफ़ यू यूज सुबिट 30 कोड तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेंगे. ये डिस्काउंट हम लोग को नहीं जाता, आप लोग डायरेक्टली DSCI लगे पे करेंगे और वो लोगों आपको पूरा प्रोसेस के लिए एडवाइस देंगे और कैसे रजिस्टर करने के लिए. मोर डिटेल्स उसका वेबसाइट पर लिखा है क्या उसमें होंगे. और एज यू कैन सी 2 घंटे पर डे होंगे 14 अक्टूबर से टिल 8 नवंबर. इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और नहीं ओनली cyber security, but also digital forensic, quantum computing, AI, in combination with security, as it is a cyber security school part, online होंगे. So if you want to enroll, please ये आप लोग से साथ share करना चाहता हूँ. If you want to enroll, you are able to do it. If you don't want, भी ठीक है, but just want to share. ये हम लोग का खुद का एक इवेंट है टुगेदर विद अकाती सिक्योरिटी. मलेशिया में मेरा एक दोस्त है, उसका बैकग्राउंड भी इंडियन है, साउथ चेन्नई का मेरा ख्याल से था, मगर मोर देन 25 साल से वो मलेशिया में काम कर रहा. उसका खुद का पेंटेस्ट का कंपनी है. टुगेदर विद हिम वी हैव सेट अप दिस सिंपोजियम. ये भी ऑनलाइन होंगे, फ्री वेबिनार, इसमें कॉस्ट नहीं होंगे. जस्ट रजिस्टर. इसमें एक फॉरम होंगे, वो फॉरम के फिल करके आप वोट कर सकते हैं from 22 topics related to cybersecurity. उन topics को आपको इंटरेस्ट है. Based on that, next week हम लोग उसमें से 6 topics निकालने वाले हैं and we will present it during 19 October with. सर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हाँ, जो लोग सब सेशन ज्वाइन करेंगे और फीडबैक फॉरम और सम क्वेश्चंस जो हम लोग देंगे फॉरम में, उसको जो आंसर करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेंगे. हेलो सर, आई क्वेश्चन सर मैं बोल रहा हूँ जैसे ये आपके ये जो वेबिनार है सर, इसकी लिंक यही ग्रुप पे मिल सकती है सर, ये साइबर सिक्योरिटी सिम्पोजियम फॉर स्टूडेंट यंग प्रोफेशनल इन इंडिया, क्योंकि सर QR को अपन स्कैन जब. हाँ, वो हम लोग ये ग्रुप में डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी शेयर किया, बट देयर इज एन लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक है, सो वी कैन शेयर. हाँ सर, मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में. Okay, आपने जैसे मुझे सेंड किया था, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है. Yeah, okay, thank you. So last Yes, part, before you are able to answer and ask more questions, some general motivation tips, nahi on cyber security only, but also general आम आदमी के लिए. क्वेश्चन आस्क सर. या हेलो सर, आई क्वेश्चन आस्क, जैसे सर अपन कोई यानी कोई जैसे एक प्रोफेशनल यानी एक प्रोफेसर से जब अपन डिबेट करते, तो सर वो जो डिबेट रहता है वो हिंदी में परफेक्ट रहेगा या इंग्लिश में? मेरा सिंपल कहना है, डिपेंड होता है कि कौन और किसके लिए यूज करना पड़ेगा.
तो जब जब आपको स्ट्रॉन्ग है और आपको प्रॉपर समझ में सब चीज आता है हिंदी में, तो मेरा एडवाइस होंगे हिंदी यस में सर, करना। मगर यस जब सर, आपको ज्यादा यस, कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में, तो मैं हाँ, ऑफ्टन जस्ट रिमाइंड मी वन पार्ट। मैं ऑफ्टन कौन बनेगा करोड़पति यस, देखता हूँ यहाँ से, नेदरलैंड्स में हम लोग को भी देता है। तो उसमें मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन यस सर, पूछता है क्वेश्चन, सर आपको क्या हिंदी में वो क्वेश्चन चाहिए या इंग्लिश में? तब मैं सोच रहा था कि हाँ, कभी हिंदी आई में डोंट बात थिंक कि करनी है। हाँ कि और आंसर भी देना है हिंदी में या क्वेश्चन इंग्लिश में। तब मैं खुद के लिए सोच रहा था कभी, आई डोंट थिंक सो, बट कभी जो हो सकता कि मुझे वहाँ हॉट सीट पर बैठ के पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन जो अमिताभ बच्चन सर मुझे पूछेंगे तो मैं क्या कहने वाला हूँ? तो मैंने कहा हिंदी तो मुझे समझ में आता है, मगर कितने वर्ड्स होता है जो इतना डिफिकल्ट होता है, इवन अमिताभ बच्चन उसको कहते हैं तो मुझे तो नहीं समझ में आता। और तब मैं सोचा हाँ जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मैं मे बी 99% श्योर हूँ कि मैं हर वर्ड मुझे मालूम है। मगर हिंदी में शायद 80% होगा, 70 होंगे, और ये वो 30% पूछ लेंगे तो उसमें मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे सकता। तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो मेरा ख्याल से वो बेस्ट होंगे। बट इंडीड आपको जो एक रिपोर्ट पोस्ट करना और आपको मैनेजर का देना, वो मैनेजर यूएस में है या यूरोप में, तो ऑफकोर्स आपको इंग्लिश में तो करना पड़ेगा। सो आपका प्रिपरेशन भी होंगे, सो डिपेंड होता है। बट हाँ, इफ यू ट्राई। मैं क्यों कह रहा, क्योंकि जब मैं डिजिटल फोरेंसिक ट्रेनिंग किया था, मेरा ट्रेनर दिल्ली से आया था, मैं दुबई गया था ये ट्रेनिंग फॉलो करने के लिए। राहुल उसका नाम था, वो मेरा दोस्त भी है अब। उससे मैंने कहा, वो स्टार्ट किया मुझे एक्सप्लेन करने के ये CHFI के ट्रेनिंग के लिए। वो कह रहा, मैं कह रहा राहुल मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आता। पहला बार मैंने पूछा राहुल आपको हिंदी आती है? वो कह रहा आता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक। वो मैं कह मैं पूछ सकता हूँ आपको हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि वो इंग्लिश में देने वाला था पूरा ट्रेन। वो कह रहा आपका मर्जी, जब आपको मैं समझा लूंगा बेटर हिंदी में, आपको समझ में आएंगे तो ठीक है मैं हिंदी में करता हूँ, और जो इंग्लिश में बेटर समझेंगे तो ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूँ कि गोल क्या होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक जैसे वो समझाएंगे और जैसे आपको समझ में आएंगे उसको निकाल देना। तो अब मेरे लिए एग्जांपल देता हूँ। एक था क्वेश्चन अबाउट डीडोस अटैक्स को, उसको कैसे आप ट्रेस कर सकते हो और चेक कर सकते हैं। सो वो एक्सप्लेन किया वेरी सिंपल वे पर। डीडोस एक बकेट होंगे और बकेट जिसमें पानी आएंगे, जब ज़्यादा पानी हो जाएंगे तो पानी निकल जाएंगे। सो क्योंकि तब ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें जा रहा है पानी इन दिस सिचुएशन, तो ओवरफ्लूड हो जाएंगे। वो डीडोस में भी होता, ट्रैफिक जाता है, ज़्यादा आ जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो मुझे जो एग्जाम्पल वो क्वेश्चन मिला तो मुझे याद आया कि वो एक्सप्लेन किया था कि बकेट से पानी, ऐसे हिंदी में मुझे एक्सप्लेन किया। तो उसका थ्रू मैं इजी था मेरे लिए वो आंसर क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो वो डिपेंड होता है कि आपके लिए कौन पार्ट के लिए आपको चाहिए। होप दिस आंसर द क्वेश्चन। मैं आई थिंक 2-3 मिनट और मुझे लेंगे, देन वी आर सर एबल, आई एम ऑलरेडी या हेलो सर। यस। सर ये वेबिनार के बाद किया वेबिनार के बाद क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मालूम, आप लोग को चेक करना पड़ेगा। शायद इन्फिसारा फोरेंसिक्स कह सकता है और इसका आंसर दे सकता है। Yes, sir. Yes, sir. We are going to provide. We have to provide the details in group. Okay. Yeah, sorry, I'm not able to read the chat now, but let me Yes, sir. finish this part. I think in few minutes I'm done, and then we are able to answer Yes, the yes, question. yes, sir. As I mentioned, I have done more than 24 certification, international certifications किया हूँ related to cybersecurity. उसमें भी मैंने कितने बार फेल हुआ, तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ मुश्किल ही है। मगर जो ये पिक्चर देखेंगे कि टोटल ओवरऑल सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया। Are you still able to hear me? Yes, sir. Anyone? Oh, sorry. Sorry, my mic was on mute. I don't know. Mute. I don't know why. So even I was able to have failed twice. उसके जो मैंने फेल हुआ उसको मैंने फिर देखा, कोशिश किया हुआ why I'm failing, even then later on I was able to pass that one. So इससे मेरा कहना है even आप लोग क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, try to learn from your mistakes. So यहाँ भी एक सैंपल देख सकते हैं। थ्योरी से हम लोग सीखेंगे,
प्रैक्टिकल वे पर, स्पेशली जो आप लैब्स करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल वे में आप बेटर समझेंगे. बट मिस्टेक्स से भी सीखते हैं लोग. सो इफ यू फेल्ड, नो, ट्राई टू नो कि कौन रीजन से आप फेल हो. नहीं कहना है कि आपको हर बार फेल होना है, बट कोशिश कर सकते हैं कि जो पाथ से आप फेल हुआ उस पर आप कुछ कर सकते हैं. So you want another quote, what you are able to do. So, but don't fear for failure, but rather fear for not trying. कोशिश करेंगे तब आपको मालूम होंगे कि क्या सीख सकते हो, क्या कर सकते हो उसे. एक दूसरा quote मेरा डैड कह रहा था, but he's passed away long time ago, but everything we do should be aimed to become a better version of ourselves. ये चाहे सिक्योरिटी में कुछ करेंगे या जोन काम करते हो और कुछ करने वाला है, हम लोग जो कुछ करेंगे हम लोग को चाहिए कोशिश करने के अपना खुद को और बेटर करने के लिए. हो शायद मैं हूँ ऑलरेडी, आप लोग भी ऑलरेडी बेस्ट हो, बेटर हो, बट जहाँ आप खुद को अपना थोड़ा थोड़ा बेटर कर सकते हो, देन आप ही का उसमें बेनिफिट होंगे. So the part what I just want to see share with you, success. मैं एग्जाम कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम पास किया, लोग देख रहा मेरा सक्सेस कि मैंने ये सर्टिफिकेशन पास किया, मेरा ये पार्ट है. मगर जो लोग उसमें काम किया है before, they was knowing about a lot of them. What persons and peoples are not seeing, but we are aware about it. So कि क्या रिस्क लिए, क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट था, क्या प्राइवेट और स्ट्रगल्स किए थे, क्या क्या किए थे, डेडिकेशन. सो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जानने के लिए. मत सिर्फ देखना दूसर के सक्सेस के लिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग एंड गेटिंग दोज पार्ट इज ऑल्सो पार्ट. इवन आप प्रोफेसर हो या CEO हो या स्टूडेंट हो, आप चाहे जोन हो, आज हो 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप सक्सेसेस लेंगे और उसमें जाएंगे, तो ये काइंड के सिचुएशंस आप फेस करेंगे और कर सकते हो. सो दिस वन जस्ट वांट टू शेयर, वॉलंटियर्स जो बनेंगे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं सीखने के लिए. बाय द वे, ये एक मैंने इमेज बनाया था अहमदाबाद एयरपोर्ट का पर था, महात्मा गांधी का कोट भी इसमें है, बट ये वाज रिलेटेड टू महात्मा गांधी. So some of the part which you are able to do, but the best way to find yourself is to lose yourself in services of order. आप जो किसी को मदद कर सकते हो और करने वाले आपको भी फीलिंग होता है. बट ऑफ कोर्स ऑलवेज नहीं होता कि आपको अपना काम सब छोड़ ओढ़ के डायरेक्टली सबको सब चीज़ पर हाँ करना पड़ेगा. ट्राई टू कंसिडर ऑन इट, एंड जहाँ हो सकता है ट्राई टू be a part and share your knowledge and information, especially security awareness के related. आप लोग को कुछ मालूम है, किसी और को कुछ पूछना है इसके बारे में, तो पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. स्पेशली भी हम लोग के पेरेंट्स, नानी नाना, आजी आजा, ग्रेट पेरेंट्स, ये लोग को ये डिजिटल वर्क, साइबर सिक्योरिटी ये लोग नहीं मालूम और बहुत कम मालूम है. If we are knowing what's going on, कि एक व्हाट्सएप पर मिलेंगे मैसेज कि मुझे 10,000 इंडियन रुपीस ट्रांसफर कर देना, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ये काइंड के सिचुएशन जो होंगे, तो उस पर मत क्लिक करना, मत फॉलो करना. जस्ट कॉल योर फैमिली, किसी को कॉल करके नहीं ये आया क्या करूँ, नहीं पहले क्लिक करने सर के आई लिए. क्वेश्चन आस्क, सर आपने ये जो डायग्राम बनाया था, ये सर कोई वेबिनार पे बनाया था कि कुछ ऐसे स्किल्स के लिए ये जो आप बनाए हो, महात्मा गांधी वाला चक्र? Don't wait a minute after the webinar. You can ask question. Don't interpret, sir. Give me 1, 2, 3 slides and then I'm done and I'm able to answer your After question. the sir completes, please ask question. Don't interpret, sir. लास्ट वन मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ. मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था 20 अगस्त को. ये एक इंडियन स्पेस का कॉन्फ्रेंस था, मैंने ज्वाइन किया था. मगर मैंने ही ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे इंडियन स्पेस में कुछ करना. मगर जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मैंने सिमिलरिटी देखा साइबर सिक्योरिटी से, और सम की टेक अवे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये लोग भी कर रहा, दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट, दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉई, लोग जो
करना चाहते हैं कुछ इंडियन स्पेस में। टेक्निकल स्किल्स ऑन आईटी और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ये लोग वो लोग के ढूंढना। कीप योर फोकस, आपको ये चांद पर जाना है, आपको यही आपका ड्रीम है, ट्राई टू फोकस ऑन इट, गेट टू डन व्हाट यू नीड टू डन टू बी एंड फोकस ऑन इट। मोटिवेशन टिप जैसे होंगे, आपको यही मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरा मेन गोल ये है। और कीप लर्निंग पार्ट यहाँ भी दिखाई देता है, नए नए टेक्निक्स आते होंगे, सो यू कुड बी एबल टू। सो आई सॉ दिस सिमिलरिटी आप लोग को जिसमें करना आपको लोग को दिखाई देता है, इसरो और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ये कर रहा, प्लीज रीच आउट टू देम। सो दैट इज माय पार्ट। एनी क्वेश्चन, फीडबैक? जैसे मैंने कहा, आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में, भोजपुरी में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सब लोग। Thank you. We Thank you, want sir, to so hear much. something in Bhojpuri from you. Thank you, sir. Thank you, sir. Shashank, you have any questions? Please go ahead. यस सर, माय क्वेश्चन इज, सॉरी मैं हिंदी यूज करता हूँ आपके लिए। तो हाँ, सर ठीक। मैं करंटली I4C में वर्क कर रहा हूँ और लाइक मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। तो एक अभी रिसेंटली में ही मेरे पास एक केस आया था रैंसमवेयर अटैक का। तो उसमें क्या अटैकर जो अटैकर था उसने क्या करा था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर बना के उसमें सबसे सारे लॉग्स डिलीट कर दिए थे। और वो लॉग्स एनालिसिस करने के उसमें लायक ही नहीं थे, मतलब लाइक उसके लॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो उसमें एंटी फॉरेंसिक्स तो ऑब्वियसली बात है यूज हुई है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग मेंशन किया था, यू कैन ट्राई टू यूज सम टूल्स जहाँ से आप वो लॉक्स को, और वो लॉक कभी ये बैकअप हुआ था और कहूँ था और दूसरे सिस्टम में, दूसरे एनवायरनमेंट में, जब डेटाबेसेस होंगे और एप्लीकेशन रिलेटेड होंगे और वेब रिलेटेड, हो सकता है कि वो डेटाबेस का लॉक्स जो होंगे और समथिंग, आई डोंट नो कि कौन लॉग है, बट दोस लॉग हो सकता है वो सिंक हुआ था दूसरे डेटा सेंटर से समवेयर। तो वो वे पर आप कोशिश कर सकते हो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सो या थोड़ा हार्ड है मुझे डायरेक्टली आंसर देने के लिए, बट क्योंकि मैं एनवायरनमेंट नहीं मालूम और क्या क्या उसमें रिलेटेड है, बट दोज काइंड ऑफ वेज यू आर एबल टू यूज और ट्राई टू यूज सम टूल्स जहाँ से अब आप लॉक निकाल सकते हैं। सो जब देखेंगे तो एक वे नहीं होता है एक लॉक मिले, हो सकता है कि आपको वो उसका रजिस्ट्री में कुछ देखना पड़ेगा, जो विंडोज होंगे या लिनक्स सिस्टम होंगे, कि रजिस्ट्री में वो लोग क्या किया था एंड हाउ दे आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। सो होप दिस गिव यू सम गाइडलाइंस वेयर यू आर एबल टू प्रोसीड। हाँ सर, वैसे तो मतलब लाइक मैंने विंडो शेल बैग और विंडो रजिस्ट्री में सारा चेक कर लिया था, बट उधर से भी कई फाइंडिंग्स नहीं मिल रही थी। लॉक्स जो थे बिल्कुल एकदम क्लियर हो रखे थे बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी उसके पास, तो नथिंग फाइंड हुआ उसके ऊपर। एंड द सेकंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, इसको स्किप करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज माय कि लाइक अगर एक इमेज है, अब हमारे पास जो पिछले बार हमने एक केस सॉल्व करा था, अभी रिसेंटली का ही केस है, मतलब 2 हफ्ते हुए होंगे उसको। तो उस केस में क्या था कि जो विक्टिम था उसने एंटी फॉरेंसिक टेक्निक यूज कर की थी और उसने सारे के सारे मैजिक नंबर ही चेंज कर दिए थे। तो उसने मैजिक नंबर सारे के सारे चेंज कर दिए थे। तो उस रिगार्डिंग क्या करना चाहिए? क्योंकि जब हम टूल्स देख रहे हैं, टूल्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीजों को, तो वो उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा था इतने अच्छे से। तो बाद में जाके आगे जाके जब हमने उससे ही पूछताछ करी तो फिर उसने ही एंड में बोला कि मैंने इसके सारे मैजिक नंबर चेंज कर दिए थे। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो वो काइंड की सिचुएशन और हार्ड होता है, क्योंकि आपको वो लिंक ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कौन कोलरेशन है, वो इवेंट आईडी और कोड या कौन चीज जो यूज हुआ। तो इंडीड वो काइंड के सिचुएशंस में और शायद आपको और मदद चाहिए और सोर्सेस चाहिए, और आपको कोड लेवल पर उसको ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और ट्रेस से इसे आपको चेक करना पड़ेगा। सो यू नीड टू गो इन डेप्थ, और दूसरे टूलिंग से आप यूज़ कर सकते हो और कॉम्बिनेशन ऑफ टूलिंग। मैं जो एग्जांपल देता हूँ, मैं जो फोरेंसिक्स कर रहा था, तो और नहीं फोरेंसिक्स सिर्फ, मैं पेन टेस्ट भी किया हूँ यही सेम जस्टिस सिक्योरिटी के लिए, जेल्स के लिए। मुझे पेन टेस्ट भी कर रहा था, तभी हम लोग ऑलवेज 2 टूल यूज़ करते थे। कभी कभी एक ओपन सोर्स करते थे, कभी एक पेड वन, कमर्शियल वन, और कभी 2 कमर्शियल वन और 2 ओपन सोर्स। तो कभी कभी हो सकता है कि एक टूल को वो नहीं मिलता है जो आपको ढूंढ रहे हैं।
So then maybe say make sense to use other tools or other approach दूसरा जहाँ से वो. So not always to use the same entrance कि घर में मेन डोर से अंदर आने के लिए तब आपको वो ट्रेस मिलेंगे. शायद बाहर से पीछे से आपको आना पड़ेगा. तो आपको ज़्यादा दूसरे क्लू मिलेंगे, दूसरा आइडिया मिलेंगे. So or just share your info with your colleague or someone else कि देख ये हुआ आपको आप क्या कर सकते हैं और how can we proceed. So those kind of tips advice will mostly help. But yeah, indeed हो सकता कभी कभी आप एक डेड एंड पाए जाएंगे कि नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा. जैसे मैंने कहा then again it will be कि is that worth to go in depth in details to get the information कि यहाँ इतने ठीक है we are not able to provide it. So वो एक डेटा होता है और कितना भी होता है. मैं जो फोरेंसिक किया था कितने होता है हम लोग डेटा मिल गया, इंफॉर्मेशन एविडेंस मिल गया, बट वी आर नॉट एबल टू प्रूव कि ये इंटेगर है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वो मैनिपुलेट हुआ था. तो तब मैं जो उसको कोर्ट में दूंगा तो कोर्ट कहेंगे प्रूफ करना कि उसका हैश तो सेम है कि नहीं, कि हैश चेंज हो गया और एनी आइटम्स जहां हम लोग यूज करके प्रूफ कर सकते कि सेम उसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं हुआ. तो तब वो हाँ होता था, देन यू आर एबल टू नो, आपको मालूम कि क्या हो कि उसका फ्लो क्या था क्या हुआ, बट आप नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो सिचुएशन भी होता. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर नोइंग दिस तो वो मालवेयर जो हैकर्स जो ना जो किया हो वो लोग को शायद भी मालूम हो, तो वो लोग तो आपको गुमराह करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ये डायरेक्शन पर जाना है, इतना तो लोग जाएंगे, उसके बाद में डेड एंड पाए जाएंगे तो रुक जाएंगे. वो मेन गोल वो ही लोग के वही तो होता है. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन आल्सो. सर Yes, एक sir. क्वेश्चन Thank you, था sir. सर. सर एक क्वेश्चन था Yep. सर, साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए? A good question. पहला बार फ्यूचर मेरा ख्याल से है ही और रहेंगे, क्योंकि मैं 11 साल से ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा हूँ. अब मुझे नहीं दिखाई देता कि और 5 साल पहले भी मुझे नहीं दिखाई देता था कि मेरे लिए जॉब सर्विसेज असाइनमेंट कम हो रहा है और कम इवन ज़्यादा हो रहा, और स्पेशली कौन कौन पार्ट पर ज़्यादा हो रहा है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से निश में पड़ता है. और निश मीनिंग होता है कि जहाँ कम लोग को उसका नॉलेज और स्किल है. और उसमें मैं 3 चीज़ देख रहा हूँ. एक है पेन टेस्टिंग में, क्रिप्टोग्राफी में और क्रिप्टो और क्वांटम कंप्यूटिंग में और डिजिटल फोरेंसिक्स में. मगर डिजिटल फोरेंसिक्स और पेन टेस्ट जो है ये दोनों में मैं थोड़ा कम दिखाई देता है कि होने वाला है. एंड वाई? क्योंकि एआई से, चैट जीपीटी से और जिन ये नए डेवलपमेंट हो रहा है एमएल डीप लर्निंग से, ये काइंड ऑफ टेक्निक से ये थोड़ा बहुत पार्ट जो सिंपल पार्ट्स होता है डू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट वो ये टूल्स कर लेंगे. बट जहाँ आपको इन डेप्थ और आपका लॉजिक वही यूज़ करना पड़ता है, हाउ एंड व्हाट हैपन, वो टाइम लगेंगे कि ये एआई नो सब कर लेंगे. तो हम लोग की ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें इम्पोर्टेंट. बट जो बेसिक्स काम होंगे, जो सिंपली collect the logs and check make the link और ग्राफ वेपर, वो मेरा ख्याल से कमिंग सालों में कम होने वाला है. क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आने वाला है उसमें तो ज़्यादा मेरा ख्याल से भी और इम्प्रूवमेंट होने वाला है. Hope this answers your question. So if you're considering to move, मेरा ख्याल से advice होंगे, still you are able to jump into this field. But indeed, hard working, पढ़ना लिखना वो important भी होता है. Anyone next question? और मैं chat में से देख सकता हूँ. तो chat box में one question है. Take logs from a firewall network. Logs will help Sir. in this situation. Sorry, logs, taking the logs from a firewall and then? Network logs will help in this situation. That was anything. I should it is the answer for anyone. Someone has asked question. सर आई क्वेश्चन आस्क सर. अभी सर मेरा यूजी
फॉरेंसिक से है सर, तो मुझे पीजी जो करना है तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कौन सा लेना चाहिए? सॉरी, इतना डिटेल्स में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे नहीं मालूम और क्या उसके बाद में हो सकता है। तो आई गेस या जब जब कहाँ हम डिपेंड होता कि कौन पार्ट में आप फोरेंसिक्स में जाना चाहते हो, बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हो। बट मेनली जैसे मैंने कहा, मोस्टली भी जो देखेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स के जब ट्रेनिंग करते हो और पढ़ाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स जो मैंने प्रीवियस कहा था स्लाइड में कि हम लोग सब नहीं डिस्कस करने वाला है, और मैं नहीं, सो वो काइंड के टॉपिक्स यू शुड बी आल्सो फेमिलियर, एटलीस्ट बेसिक सबको आपको थोड़ा मूविंग फॉरवर्ड टू द नेटवर्किंग वन। नेटवर्किंग फायरवॉल लॉक्स आपको समझना चाहिए, यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। इसलिए मेरा अगेन कहना है, to understand digital forensic and to become a good digital forensic investigator, आपको ethical hacking का नॉलेज और स्किल्स भी होना चाहिए। वो आपका बेसिक्स होता है उसमें आप। और क्यों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले एथिकल हैकिंग का ट्रेनिंग फॉलो किया। आधा साल बाद मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया, मैंने आधा साल बाद ये डिजिटल फोरेंसिक लिया। मेरा ट्रेनर जो आया, जैसे मैंने कहा राहुल, मुझे वो ट्रेनिंग दिया था दुबई में, वो मुझे ट्रेनिंग दिया तो वो कह रहा आपको तो आधा से ज़्यादा स्किल्स है ही डिजिटल फोरेंसिक्स के। तो मैंने कहा मैंने तो ये ट्रेनिंग कभी नहीं किया। तो ये कहो नहीं, डिजिटल एथिकल हैकिंग में आपको पासवर्ड टूल्स यूज करना ये वो सिखाई देता, तो वो आपको तो मालूम है। अब जो हम लोग द वे द प्रोसेसेस व्हाट वी आर यूजिंग इन डिजिटल फोरेंसिक, उसको उस पर आपको फोकस करना। तो ऑलमोस्ट आधा मेरा पास था एंड देन, मगर ज़्यादा लोग सोचते हैं मैं डायरेक्टली डिजिटल फोरेंसिक में कर लूँगा, ये हैकिंग पासवर्ड टूल्स टेक्निक जो होता है इसको छोड़ो, तब आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता। So hope this answers also your question. Anyone Thank you. else? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन दिखाई देता है, व्हाट इज डिस्काउसिंग, हर्ष ने पूछा था, मुझे दिखाई देता। तो वो एक्चुअली होता है जहां आप वो मैग्नेट से और उसका हार्डवेयर पार्ट आप उसको डिसओरिएंट करते थे और तोड़ देते हैं। तो आपको मालूम जाएगा हार्ड डिस्क होंगे और अपना टीवी स्क्रीन पर देखेंगे या एलसीडी स्क्रीन जो ना आपको होंगे, आप एक मैग्नेट लेके जाएंगे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि वो कलर चेंज होता है। तो उससे आप जब स्ट्रोंगर वाला से करेंगे तो वो उसको आप तोड़ सकते हो। So those ways you try to destroy the information. Anyone else? Other questions? Thank you, sir. Sir, I have a question. Yes. Sir, being from a non-technical background, how would you say my interest in cyber? I did one internship in Gurgaon Cyber Police. It increased my interest in cyber security and cyber crimes. But being from a non-technical background, I don't, know how to use tools or this OSINT or Linux and all. So, what would you say I can do to, learn them online if possible? Like, Yeah. not from YouTube, but any platform that I can use. Good question. ये क्वेश्चन मैं ऑफ्टन सुनता हूँ, सो पहली बार नहीं मैंने सुना। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, हम लोग का नॉर्मल एक करियर इन साइबर सिक्योरिटी वेबिनार्स होता है, उसमें हम लोग मोस्टली एक्सप्लेन करते हैं। टेक्निकल वन, हाँ मुझे मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल इंटरेस्ट है, एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, मुझे ये हैक करना, ये पासवर्ड हैक करना, इवन वो इलीगल है, नहीं अलाउ है करने के लिए, मगर लोग वो टेक्निक सीखना चाहते हैं। सो वो मुझे मैं ऑफ्टन दिखा रहा, मगर ज़्यादा भी दिखाई देता है कि जो कहना मैं टेक्निकल तो नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ नॉर्मल केसेस के लिए, मगर मुझे अब एक साइबर केस आ गया, अब उसका लॉयर, सो मैं तो टेक्निकल को समझ में नहीं आएंगे। सो वो लोगों के लिए भी है अपॉर्चुनिटी, बट देन मोर ए फोकस इनटू दोस सॉफ्ट स्किल्स और जो मैनेजमेंट पार्ट में होता। तो मेरा एडवाइस होंगे, चेक एंड सी दिस काइंड ऑफ रोल्स,
जैसे मैनेजमेंट होगा और प्रोजेक्ट लीडर इन साइबर सिक्योरिटी, और जब आप लॉयर में से हो तो लॉयर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के लिए, और डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए आपको थोड़ा बहुत तो टेक्निकल में ढूंढना घुसना पड़ेगा शायद, बट इफ यू आर ओनली द पार्ट वेयर यू नीड टू राइट दोस रिपोर्ट्स, हाँ तो आपको समझना चाहिए लिंक क्या होंगे, बट एकदम डिटेल्स में नहीं। सो जहाँ आपको डिटेल्स में जाना चाहिए ऑन दोस टॉपिक्स, यू शुड बी एबल टू विलिंग टू लर्न। या आपको कहना है नहीं मुझे एक बुन नहीं सीखना है, कुछ नहीं सीखना टेक्निकल के, तो वो रोल्स के लिए भी आप प्लीज नहीं अप्लाई करना, क्योंकि आपके लिए हार्ड होंगे। बट देयर आर प्लेंटी ऑफ रोल्स। कितने लोग भी सेल्स में हैं, चाहे जोन प्रोडक्ट के सेल्स में है, मुझे रीच आउट करना, मुझे साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना, क्या करूं? लेकिन मैनेजमेंट के स्किल्स तो होंगे आपको, तो मैनेजमेंट रोल्स में जाना। So those will be the guidance or advice what I will say. और दोनों के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए plenty of jobs in cyber security available है। एग्जाम्पल इंडिया के जो प्राइवेसी लॉ आ रहा है, उसका थ्रू आपको देखेंगे कि आप लोग को ज़्यादा प्राइवेसी ऑफिसर्स का जॉब रोल आएंगे, और सिक्योरिटी ऑडिटर्स का रोल्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे कि वो आएंगे। सो दैट आर रोल्स विदाउट वेरी less technical knowledge is required. So you can just check on internet or search on those roles. Advice होंगे एक दो जो मिलेंगे, then you can check on in depth about those roles कि ये मुझे पसंद है करने के लिए कि नहीं। Hope this answers your question. Yes, sir. Yes, sir. It did. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, everyone. I'm Rituja. On behalf of Invisara Forensics, we extend our heartfelt thanks to each of you for attending today's webinar. Your presence and participation have made this event a success. A special thank you to our speaker, Mr. Sunil Subedar, for his insightful presentations, and also to our collaborators, Gifsa Crafts, for their invaluable support. We hope you found this session both informative and engaging. Thank you once again for your time and involvement. Also, don't forget to fill out the feedback form. The link will be provided in the chats. Thank you. Thank you all. Namaste. Good luck. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. नमस्ते सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.